हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग का एनाटॉमी सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लिस्ट डाउन किया है, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलो, एनाटॉमी जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट इजी के लिए, 5 नंबर के लिए। क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासीफाई एपिथेलियल विथ एग्जांपल ऑफ ईच, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विथ डायग्राम, एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल, एक्सप्लेन द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विथ डायग्राम फोटो के साथ जो पिक्चर है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ typical cell, describe transitional epithelium with a level diagram, give and explain, describe pseudo stratified columnar epithelium with a diagram। तो शॉर्ट आंसर के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हिस्टोलॉजी ऑफ कार्टिलेज, पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड चैप्टर जो है द स्केलेटन सिस्टम, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। क्लासीफाई द बोन ऑफ एग्जाम्पल, classify the bone with example, describe the histology of compact bone, classify synovial joint with example, describe shoulder joint in details, classify joint details and explain humerus, describe knee joint under following headings, type and articular surface, arterial supply, what is patella, mention its importance, okay। short answer है, name the carpal bone, name the bone forming and shoulder joint, name the bone forming elbow joint, list the tarsal bone, name any 4 cranial bone, arterial supply of hip joint, name of the part of sternum, list 4 features of lumbar vertebral muscles causing pronation and supination, define the 2 type of skeleton, list any 2 difference between fetal and adult skull, okay। clavicle, bone of the lower limb, bones of the lower limbs, draw a level diagram of synovial joint, name the part of hip bone, part of developing bone, long bones, list the bones of the upper limb। यूनिट 3 में आता है मस्कुलर सिस्टम, शॉर्ट इजी में आता है मसल्स ऑफ मस्टिकेशन, डिस्क्राइब रेक्टस शीथ एंड रेक्टस एब्डोमिनल मसल, स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मतलब जो हमारा हैंड के ऊपर जो हैंड में होता है, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, वो डेल्टॉइड मसल, ट्रेपीजियस मसल, ग्लूटस मैक्सिमम मसल, बाइसेप ब्रैची मसल, नेम मसल ऑफ gluteal region, describe gluteus maximum in detail,
Short answer, name the muscle of mastication. Name any 4 bones of pelvis. Name 2 pectoral muscles and give its nerve supply. Name 2 muscles of forearm. Name the muscles of back of the thigh. Name the concept of femoral triangle. Name 4 hamstring muscle. Name 4 part of quadriceps femoris muscle. Name 4 muscle in the gluteal region. Femoral hernia. Mention the concept of cuboidal fossa. Mention the content of popliteal fossa. The nervous system. फोर्थ यूनिट में आता है नर्वस सिस्टम. उसमें शॉर्ट सी नेम द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिस्क्राइब द cerebral hemisphere. Name the various lobes of cerebrum. Describe various function area of cerebrum. Explain the structure of cerebellum in details. Describe brachial plexus of nerve, spinal cord. Draw a neat level diagram of circle of Wills. Trochlear nerve. Explain cerebellum with its anatomical significance. Classify nervous system and write a note on neurons. Ulnar nerve and its apply anatomy. Radial nerve and its apply anatomy. Short answer, name of the part of the brainstem. Name ventricle of brain. Name major part of central nervous system. Mention the function of CSF, central Name 4 cranial nerve. Mention the 2 function of cerebellum. Spinal ganglion. What is Reinich? Okay. Carpal tunnel syndromes. Mention 2 part of sciatic nerve, neuroglia. Bell's palsy, lumbar puncture. Name the branches of trigeminal nerve. Mention the function of hypoglossal nerve. Explain the deformity in Klumpig paralysis. Spatial feature of medulla oblongata. Draw a level diagram of neurons. Mention the part of the brain. List the cranial nerve. Name the part of central nervous system. Name the meningeal covering of brain in order. यूनिट 5 में सेंसरी ऑर्गन. शॉर्ट इज में ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ eyeball and briefly explain its part. Eye. Okay. Describe the extraocular muscle. Explain the part of internal ear. Describe 4 recti muscle. Describe the layers of skin with diagram. Okay. Tympanic membrane, tongue, auditory tube, epidermis, superior and inferior oblique muscle of eye, structure of eyeball. Short answer, layers of eyeball. Name the ear ossicle.
any four function of skin. Name any four function of skin. Name the papillae of tongue. List the auditory apparatus. Name three part of bony labyrinth. Mention the function of eyelid. Give the nerve supply of extraocular muscle. Mention four content of middle ear. Nerve supply of tongue to tongue. Draw and label the diagram of skin, nasal, sinuses. Name the structure of eye. यूनिट 6 में आता है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम. यहाँ पे लॉन्ग मैंने मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है. तो लॉन्ग इजी में आता है डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटोमी ऑफ हार्ट इन डिटेल्स. द नेम द चेम्बर ऑफ हार्ट विथ ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ईच चेम्बर एंड द valves in between them. Describe the right atrium in details. Describe the ventricle of heart. Write a note on blood supply of heart. Explain spleen in details, location, external features, blood supply, histology and functions. Short easy में आता है well there is rings. Mention the formation and transmission of thoracic duct. Where is spleen located and give its four important function. Name four group of cervical lymph nodes, apex heart, branches of the right coronary artery. Name three layer of wall of blood vessels. Mention two difference between large and medium sizes arteries. Mention two difference between the structure of large artery and large vein. Chamber of heart. 7 यूनिट में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. सो डिस्क्राइब द nasal cavity and its applied anatomy. Name the part of respiratory tract and describe lungs in details with applied aspects. Name the part of respiratory system. Describe the right lung in details. Next, details. Mention the different form from lung, left lung. Next, describe the structure of lungs in details with a diagram. Short answer. Name the air sinus opening into middle meters. Next, the name the paranasal air sinuses. Name the opening in the lateral wall of nose. Name the bones forming nasal sputum. Name four cartilages of larynx. Name four cartilages of larynx in the one. Name any four muscle of pharynx. Name the part of respiratory system. Name two pleural recesses. Mention four structure passing through the diagram. Mention the action of intercostal muscle, respiratory muscle. Name the part of the respiratory system. यूनिट 8 द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर. डिस्क्राइब द लोकेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड applied anatomy of rectum. Describe the part, features, blood supply and histology of stomach. Mention different part of digestive system. Describe the esophagus in details. Important है. Name the salivary gland. Where do they open? Describe the parotid gland in details.
Name the part of extra hepatic biliary apparatus. Describe the anatomy of the liver. Describe the pharynx. Describe the duodenum. Name the part of digestive system and describe stomach in details. ये भी important है. Name the location, surface, borders, blood supply and applied anatomy of liver. Liver ये भी question ये भी important है. Short answer: parotid gland, parotid gland, submandibular gland, esophagus. Histology of esophagus. Describe the blood supply of stomach, stomach bed, soft palate, duodenum, peritoneum and its function, vermiform appendix. Mention the difference between small and large intestine. Describe pancreas. Next, name the blood vessels supplying the rectum. Difference between duodenum and ileum. Describe the interior of anal canal, inferior or visceral surface of liver. Name the peritoneal folds of liver. Name different lobes of liver. Nerve supply of small intestine. Name the papillae of tongue. List the part of digestive system. Name the part of large intestine. Unit 9. The excretory system. Short easy. The ureter. Histology of kidney, urethra, urinary bladder, relation of right kidney, male urethra. Describe the macroscopic structure of kidney. Describe nephron in details. Important. Describe the kidney under following headlines: location, shape, external features, covering relations and blood supply. Describe urinary bladder in details. Add a note on its applied anatomy. Short easy. Name the part of nephron. Name the different part of urinary system, tongue or bladder, trigono of bladder. Mention the covering of kidney. Draw a level diagram of nephron. Mention the constrictions of ureter. Mention the two important relations of urinary bladder in females. Name the part of male urethra. Unit 10. The endocrine system. Short is में describe the मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन. Describe the pituitary gland in details. Name the endocrine gland. Describe the thyroid gland in details. Name the endocrine glands and describe the pancreas. Thyroid gland. Next, function of adrenal gland. Next, parathyroid gland. Relation of thyroid gland. Describe pancreas under following heading: location, part, importance, relationship of histology. Short answer: name the endocrine glands. Mention the part of pituitary gland. Mention the type of cell found in anterior pituitary. Name 2 hormones produced by neurophysis. Name any 4 hormones produced by pituitary gland. Name 4 arteries supplying the thyroid gland. Name 2 ovarian hormone. Okay. Any question? यूनिट 10 में आते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेस्ट. तो शॉर्ट इजी में आता है नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. डिस्क्राइब ऑफ एनाटॉमी ऑफ यूटेरस. नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ ओवरी. ओके.
Describe the uterus and its ligaments. Describe the female reproductive system. Support of uterus, fallopian tube, spermatogenesis, spermatogenesis. Sorry, prostate, oogenesis. Describe the structure of mammary gland. Explain the location and structure of ovary. Short answer में name the internal organ of female reproductive system. Mention the part of uterus. Name 4 ligaments of the uterus. Mention the layer of walls of uterus. Name part of fallopian tube. Mention the boundaries of ovaries fossa. Mention the layer of secretum, Graafian follicle, ductus deferens. Name the part of male urethra. Draw a diagram on the structure of uterus. आप ये सब एक खाते में नोट कर सकते हैं. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.